महर्षि अरविंद समस्त को नमस्कार तथा सावित्री अध्ययन एक अध्याय को आम समस्ते मिलित भाव आज किसी अध्ययन करने को चेष्टा करवा। श्री अरविंद कैंटो रे योगा ऑफ द सोल्स रिलीज रे जो योग मार्ग को तथा साधकर उपलब्धि को जो सबू सचेतन परिवर्तन गुड़िक रूपांतर गुड़िक सबू सम्मुखीन हुए ता विषय किछि किछि धारणा किछि किछि विजन हिंट्स ये सब प्रदत्त रही। आमे सेमती धीरे धीरे पढ़ी पढ़ी आगु को जाउछंती। अश्वपतिंकर जो नूतन आविष्कार गुड़िक सब घटुची तांका जीवन रे तांका प्रत्येक इंद्रिय रे तांकर परसेप्शन रे तांकर इंट्यूशन रे तांकर थिंकिंग रे कौनसी जिनस को भी से जो धार रे जो लाइट रो नॉलेज रो साहाय्य रे वस्तुतः तथा तत्वतः प्रत्येक जिनसर प्रत्येक परिस्थिति रो प्रत्येक व्यक्ति विशेष रो जो सत्य गुड़िक तांका सम्मुख रे उन्मिलन होउछि से गुड़िक विषय श्री अरविंद एठी किछि लाइन्स आमे गला थर जहा पढ़िथिले एबे सुधा अश्वपतिंकर दुईटी प्रमुख साध्य गोटे प्राप्ति साधना रे सिद्धिर प्राप्ति घटिची ता होची सी एबे सत्य दर्शन तथ्या सत्य श्रुति एई दुईटी सिद्धि तांकर उपलब्धि हेछि तथा आमे धीरे धीरे तांकर किपरि प्रत्येक टी सेंस माइंड एई जिनस प्रति केमिति उन्मिलित होउछि बा केमिति खोलुछि ता आडकू ये विषय रे आमे पढ़ि आछंती। धीरे धीरे आमे किछि लाइन्स प्रीवियस पेजेस रो पढ़ी की आज रो नुवा पाठ मध्ये आरंभ करिवा। वी आर एट पेज नंबर 29, बुक 1, द बुक ऑफ बिगिनिंग्स, कैंटो 3, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज, पेज नंबर 29। A channel of universal harmony, hearing was a stream of magic audience, a bed for occult sounds earth cannot hear. Out of a covert tract of slumber self, the voice came of a truth submerged, unknown that flows beneath the cosmic surfaces. Only mead and omniscient silence heard, held by intuitive heart and secret sense. It caught the burden of secrecies, sealed and dumb. It voiced the unfulfilled demand of earth and the song of promise of unrealized heavens, and all that hides in an omnipotent sleep. In the unceasing drama carried by time, on its long listening flood that bears the world's insoluble doubt on a pilgrimage without goal, a laughter of sleepless pleasure foamed and spumed, and murmurings of desire that cannot die. A cry came of the world's delight to be, the grandeur and greatness of its will to live. Recall of the soul's adventure into space, a traveler through the magic centuries, and being's labor in matter's universe. Its search for the mystic meaning of its birth and joy of high spiritual response, its throb of satisfaction and content in all the sweetness of the gifts of life, its large breath and pulse and thrill of hope and fear, its taste
of pangs and tears and ecstasy, its rapture's poignant beat of sudden bliss, the sob of its passion and unending pain, the murmur and whisper of the unheard sounds which crowd around our hearts but find no window to enter, swelled into a canticle of all that suffers to be still unknown, and all that labors vainly to be born, and all the sweetness none will ever test, and all the beauty that will never be. Inaudible to our deaf mortal ears, the wide world rhythms wove their stupendous chant, to which life strives to fit our rhyme beats here, melting our limits in the illimitable, turning the finite to infinity. ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସେନ୍ସେସ୍ ତାଙ୍କର ସଟଲ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଏଠି ଆମେ ତଥାପି ଏବେ ବି କେବଳ ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସେସ୍ର ବା ସରଫେସ୍ ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱପତି ସେଇ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୱିଲ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ କଥା ପଡ଼ିବ, ଇଏ ସବୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆଲୋଚନା ହେଇ ଆସୁଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି a channel of universal harmony, herein was a stream of magic audience, a bed for occult sounds earth cannot hear. ଏଠି itself ये ଗୋଟେ ବଡ଼ distinction ଯେ whatever was happening there was native to a world which is not ours, जोटा आम जगत नुहे। आम जगत माने पृथ्वी संपर्क बा ए मत्यमंडल विषय कुआଯାଉଛି जे पृथ्वी ପାଇଁ ये खूब दुरूह एई ऑकल्ट साउंड्स गुडिक सुनिबा एबडा बुझिबा। ऑकल्ट वर्ड जदियो इंग्लिश लेखारे बहुत माने इज स्टिल प्रिटी अनकॉमन, बट मास्टर बिंदक लेखारे आपण एई वर्ड ऑकल्ट टिकु बहुत पाए। ऑकल्ट वर्ड is a very heavy word because it does not refer to just something which is magical, miraculous or strange or unusual, but it is something which is hidden, underlined. It is there but hidden. सते जेमती गोटे कोनोसी गोटे जिंसर बैकग्राउंड रे रही कि प्रच्छद रे रही कि अनेक छोट बड़ घटना घटी जाए और से सब घटनावली रे जेमती माने ना ताकू मन बुझी पारिबो, ना ताकू प्राण धरी पारिबो, ना ताकू शरीर बहन करि पारिबो, किंतु ये सब पछरे रही कि से ऑकल्ट पावर्स माने ही सब किछि को गवर्न करछ। एपरि एक कथा एठी हमें टिके बुझिवा को चेष्टा करबा। ए ऑकल्ट वर्ड को नै कि श्रद्धावानकर गोटे अति सुंदर लाइन टी एठी, the sense of hearing is a channel of universal harmony. The sense of hearing is a channel of universal harmony. कहीं ना जो सुनिबार क्षमता मनुष्यर सी एपरि भाबरे चैनलाइज्ड हेछि जे अनेक विश्वगत बा विश्वात्मिक शक्ति गुड़िक सब संगतिपूर्ण भावरे अनेक प्रकार शब्द संग्रह करी
अनेक प्रकार रो शक्ति गुड़िक को निजर शब्द बा कौन सी प्रकार ध्वनि माध्यम रे प्रेरित करि प्रत्येक टी शक्ति जेमती आमे पृथ्वी पृष्ठ रे कौन सी फिजिकल विजन को वर्णना करने को जाकि कहीदो लैंडस्केप आपने वर्ड टी शुणी थे ये जदिव पेंटिंग संदर्भ माने संबंधी भाषा किंतु लैंडस्केप माने होची गोटे विराट जेमती देश संबंधी ना ये गोटे विराट भास्ट भूमि आपन को दिसुथबो आउ तार अनेक रंग तार अनेक वस्तु गुड़िकर जो आवरण थिबो ताकू वर्णना करबा को जेकी तो लैंडस्केप बोली कहउचंती सेमती शब्दर मध्य गोटे साउंडस्केप अछि एटा जो माने सब रिदम ऊपर रिसर्च करचंती से माने जदि सुनिथिबे दिस इज साउंडस्केप शब्द मध्य निजर गोटे भूमि निर्माण करे शब्द रास भाई तो आज कॉल रे जॉइन करचंती मु तांको कहबी लास्ट को जेतबळे क्लास शेष बेलू बा जदि मझिरे केतबळे से इच्छा करंती कहिबा पई कि माने द वाइब्रेशन ऑफ अ वर्ड एनी वर्ड and if particularly it is something which has a mantric effect can create altogether its own soundscape गोटे भूमि निर्माण करि परिबो सी सूक्ष्म जगत रे जे कि अनेक शक्ति गुडी को अनेक सत्य गुडी को आवाहन करिଥାଏ इन्वोक करଥାଏ इन्वोकेशन ए इन्वोकेशन द्वारा प्रार्थना रो जिमती गोटे तार निजर रिदम थाए गोटे वाइब्रेशन थाए आपण किछि नै गोटे रूम रे बस ओम रो उच्चारण करचंती तार गोटे सी गोटे फील्ड निर्माण करे गोटे फील्ड से फील्ड ता भारी सिक्योर कारण से साउंड भीतर भी साइलेंस को बाट पड़े दिए कंसंट्रेटेड हो जाए साउंड टी कंसंट्रेटेड हो जाए गोटे साउंड एनर्जी मंत्र इफेक्ट रे कंसंट्रेटेड हो जाए और से मंत्र आवाहन करे अनेक देवता मान से देवता माने निज शक्ति को से साउंडस्केप भितर बा से एनर्जी रो परिधि भितर से फील्ड भितर निमज्जित कर जोड़ती ता सहित निजर शक्ति को आ से पुणी उच्चारण करुवा बा से शब्दटी को शुणुवा व्यक्ति मध्य प्रवेश करे तद द्वारा मंत्र जनकर सुरक्षा करे आपण माने समस्त हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र ये एबे अवश्य ताको सत्य जुग सहित तुलना करवाटा ठीक नुहे किंतु एई मंत्र गुड़िकर एते क्षमता रही केवल गायत्री मंत्र जोटा विश्वामित्र गायत्री मंत्र श्री अरविंदर गायत्री ताठू आउ गोटे लेवल माने जदि कहबा कि को मनर केउ स्तर रु आसी तेनु ओवर माइंड लेवल रो होची विश्वामित्र गायत्री एक कथार उल्लेख रही अनेक आलोचना होती मुझे विशेष ये आलोचना को आणबी शिवबिंदर फ्रॉम द सुपर माइंड तेणु से जितेबाला कहते ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् शिवबिंदर गायत्री कहूँ ओम तत्सवितुर्वरं रूपम ज्योति परस्य धीमहि यनः सत्येन दीपयेत् A channel of universal harmony, wonderful harmonious sounds are received from all over the subtle universe and become a stream of magic audience. When we use the word audience, we normally mean people who sit and watch a performance. Here Sri Aurobindo is using this word in its original French sense of hearing. Hearing शुणिबार जो क्षमता शुणिबार जो प्रक्रिया की ताको कहा जाए ऑडियंस कैन आई हैव एन ऑडियंस विथ यू माने आपन को मु किछि सुनै पारे कि सो इट्स एन ऑडियंस हैविंग एन ऑडियंस द सटल सेंस ऑफ हियरिंग इज लाइक ए स्ट्रीम और चैनल थ्रू व्हिच ए स्ट्रीम ऑफ साउंड फ्लोज लाइक वाटर फिलिंग द बेड ऑफ अ रिवर ए बेड
For occult sounds, earth cannot hear. The sounds of the inner worlds, which our physical ears cannot hear. आमर ए जो पृथ्वीगत कर्णद्वय रही सीए से सब हिडन साउंड गुड़िक को से अकल्ट साउंड्स गुड़िक को शुणी पारे नहीं से माने कोठु आसुचंती तापरे कहले आउट ऑफ ए कोवर्ट ट्रैक्ट ऑफ स्लंबर सेल्फ द वॉइस केम ऑफ अ ट्रूथ सबमर्ज्ड unknown that flows beneath the cosmic surfaces only mid an omniscient silence heard held by intuitive heart and secret sense. गला क्लास रे मध्ये यार आलोचना में करथिले जे ये किपरि गोटे इंट्यूटिव हार्ट आ गोटे सीक्रेट सेंस नॉट द फिजिकल सेंस not the physical mind at the level of the sense mind. It's a secret sense in the subtle body of Ashwapati which is capable of hearing these occult sounds. And again it is between amidst made mane hochi amidst an omniscient silence heard. Silence शब्दटी को बुझिबा एते शब्द एते सहज नहीं काइना हमकु कलेक्टिव सजेशंस और सोशल सजेशंस द्वारा साइलेंस रो माने केवल निस्तब्धता बा गोटे प्रकार रो निष्क्रियता सहित आमे ताको जोडिछन कोनोसी क्रिया हेउ नाही से अंग बा कोनोसी प्रकार रो ऑर्गन हो किंबा सेंस इंद्रिय रो हो निष्क्रियता को ही आमे भाबी दैछंती साइलेंस whereas silence has its own dynamism. Silence रो निजरो डायनामिक्स अछि. It is not just a static principle. It is a static principle in terms of the world affairs. सेपे मु कोए जेंती मिथ्या बोली किछि नाही मिच्छा बोली गोटे जिंस अछि कि सत्य बा असत्य बा सत्य को माने प्रकाशित न करूथुबा गोटे कोनोसी वाक्य बा इंफॉर्मेशन को हमें फॉल्स कहि पारू. One that is not truth is false. One that is not truth is false. सेमती आम पई साइलेंस रो माने ही जाईची anything which has no sound is silent. Anything that has no sound, but silence रो माने आदो से नहीं. सावित्री और श्री अरविंदन का लिटरेचर कॉन्टेक्स्ट रे तो एटलीस्ट नहीं. Silence in itself is a condition where everything gets concentrated with the power of sound. Everything gets released. से जेति की बाहर को मूव करे सेति की भीतर को मध्य प्रवेश करे. साइलेंस आपण केबे चिंता करछन ए जिंसटी एपरि भाबी की देखंतु मो भीतर को साइलेंस प्रवेश कला मु जेतेबेले मोर सब प्रकार रो अफेयर्स को धीरे धीरे आगे प्रथमे किए साइलेंट हो साइलेंट को उपलब्धि करिवार मार्ग कोन सब बेले माने इट कैन बी टू वे एज पर एनीबॉडीज चॉइस ऑफ प्रैक्टिस. आपण चाहिले भितरु यू कैन इन्वोक और यू कैन ट्राई टू ब्रिंग इन फ्रॉम आउटसाइड where silence penetrates you, silence imbibes within you. आपण मात्र हमर ऑरोविल रे मातृ मंदिर जाइछन्ती सेठी भितरु आछि. There is a pressure of silence, enormous pressure of silence. प्रभाकर भाई कहला वाला सेठी मेडिटेशन माडिबो जिंदी निद माडे सेंदी मेडिटेशन माडिबो. There is a certain गोटे चाप अछि गोटे फोर्स अछि साइलेंस. It will not enable you to produce something like a sound. किंतु ताठारु आउरी पावरफुल साइलेंस होछि भितरे. ये तो तार गोटे रिफ्लेक्शन मात्र ना symbolism. Our entire yogic journey inside is replicated to that one globe of Matri Mandir, starting from the door entrance to the exit to the stairs to the platform to the pillars to the crystal. Everything is a symbol of what happens in one's inner life or inner domain till you reach the sanctum sanctorum where the soul resides or the psychic stands. So silence in itself surrounds you.
तो आपण कहबे मु गोटे रूम बंद कर देबी बाहर सब लॉक कर देबी हां भितरे मांकर टिके म्यूजिक प्ले कली गोटे somehow external aid सब प्रकार रही I will sit and I will try to attain silence or develop silence or generate silence produce silence सेटा से पर्यंत संभव नुहे जे पर्यंत भितरे साइलेंस टी प्रवेश न होछि बा भितरु साइलेंस र किछि ओटे डेवलपमेंट न होछि kind of thoughts will still be there vital will still have its motion within you and the body is there to respond to everything of that sort तो आपण केमती करिवे how do you practice silence तो आम खंडगिरी क्लास रे ता ऊपर 1.5 वर्ष आलोचना करछन्ते on silence on how you reach take a stage of calm then quiet then peace then silence and win that silence Jashavinda Likuchanti omniscient silence heard a silence which pervades a silence which enters into everything that flows beneath the cosmic surfaces the voice came of a truth submerged unknown that flows beneath the cosmic surfaces a cosmos re jaha kichi ghatuchi ame surface re dekhuchu beneath that a truth is flowing like a stream and now that truth is heard to Ashwapati in that silence held by intuitive heart and secret sense it caught the burden of secrecies sealed and dumb it voiced the unfulfilled demand of earth and the song of promise of unrealized heavens and all that hides in an omnipotent sleep se jo maha nidra it refers to the primal sleep जेतेबेले सब किछि सील्ड एवं डम्ब हेकी से निश्चेतना रे बुडी की रहिथिला अर्थ जो डिमांड टी अनफुलफिल हेकी रहिछि ताकू वॉइस देला परी आजी एई शब्दटी केउ गुहा भितरु बाहरी अश्वपतिंकु अश्वपतिंकर श्रवण ही विश्व सौसम्यर एक प्रणाली परी होई उठे सेथिरे कोनसी सामंजस्यहीन शब्द न थाए बा असंगत संगीत धारा न थाए किंतु सेथिरे एक विश्व संगतिर प्रवाह देखा दिए से सम्मुख बाणी सब सुनिबा को पाउछंती तांको श्रुति गुह्य ध्वनिर एक सज्जा परी होई जाए जहा मर्त्य श्रवण परिसर ऊर्ध्वरे आत्मार सुसुप्ति स्तररु एक गोपन अंचल देई तांको निकटकू निमग्न सत्यर बाणी प्रवाहित होई आसिला जहा विश्वर बहि स्तरर अंतराल रे प्रवाहित हेउथाय एवं जहा एक सर्वज्ञानमय नीरवता मध्यरे सुना जाई पारे ताहा केवल एक अंतर्बोधी हृदय बा एक गूढ़ इंद्रिय द्वारा विधृत होई पारे एक पंक्तिटी रे ए जो ए पर्टिकुलर स्टैंजाटी रे आउट ऑफ ए कोवर्ट ट्रैक्ट ऑफ स्लंबर सेल्फ द वॉइस केम ऑफ अ ट्रूथ सबमर्ज्ड ए संबंध रे एटाकू प्रभाकर भाईंकर ए सावित्री अध्ययन रो ट्रांसलेशन रु पढ़िली ए ओमनीपोटेंट स्लीप विषय रे केना ये तो प्रेग्नेटेड भूमि ना दैट स्लीप इटसेल्फ is impregnated with the possibility of creation तेणु विश्वर कर्तांकर बा परम ब्रह्मंकर से निद्राटी को हमें सामान्य निद्रा बोली कहि परिबा इट इज अ स्लंबर स्लीप नो डाउट सर omnipotent sleep in that sleep also it has the burden of secrecies which is sealed and dumb. It has the voice of earth which is unfulfilled. It has the song of promise of unrealized heavens. Unrealized heavens. एक कथाटी को भी देखंतु जो स्वर्ग गुडी को रियलाइज हेनी कोठी पृथ्वी
अनरियलाइज्ड हेबे पृथ्वीर से डिमांड टी रही सबू बुड़ीकी रही से निद्रा भितर सिंथेसिस ऑफ जोगर गोटे पैसेज को प्रभाकर भाई वेरी एप्टली सावित्री अध्ययन जो द्वितीय खंडटी रही आपण माने ताको जदी पाखरे थिबो भल नथिले टिके ताको पढंतु काना ये आम पई इट ब्रिंग्स ऑल द रेफरेंसेस एट one place, so it's very easy to connect with Sri Aurobindo's thought and vision and writings at various places. Indeed, the physical senses are themselves in reality only a projection of the inner sense into limited and externalized operation in and through and upon the phenomenon of gross matter. आमे आमर बाह्य इंद्रिय गुड़िकु यथार्थरे आमर अंतर्गत होइथि रहिथिबा सूक्ष्म इंद्रियर स्थूल जड़र व्यापारटी मध्यरे ताहारी मध्य देई एवं सेही जड़ उपरे संगठित हेउथिबा सीमाबद्ध एवं बाह्य क्रियात्मकता मध्यकु एक प्रक्षेपण बोली कहि परिबा. इट्स अ प्रोजेक्शन भितरे जहा किछि रहिछि इनर सेंसेस बाह्य सेंसेस गुड़िक तार केवल गोटे प्रोजेक्शन मात्र. तेणु ए कथार यथार्थता रही जे पृथ्वी रे जहा किछि आमे देखुचंती दीज आर ऑल प्रोजेक्शन फ्रॉम दैट इनर वर्ल्ड. आउ से इनर जगत रे ही सब प्रकार रो सत्य निजको लुकायित करिकि रखिछि. आउ या परे one of the very long passages of Savitri apna a passage tiku itself it can be called a poem, but jo context re asichi aji we will take up these 18 lines for the last part of discussion. Kintu one has to understand a purbaru ubhay jinsa sound and silence both sorry साउंड एंड साइलेंस उभय को बुझिले कारण सेते बेलु मु जो कॉन्टेक्स्ट को डेवलप करिया को चाहूची ताहा होची जेमिति हम सेंसेस हम पाखरे प्रत्येक टी विजन को आनी करी से आउटर वर्ल्ड रे हो किबा इनर वर्ल्ड रे हो आनी की पहुंचे दिया हो हमें ताको टिके बुझी पारू. यदि साउंड ऊपर कंसंट्रेट करा जाए ताहले आपे छाए साइलेंस पाखरे पहुंची जिवे कारण मूलटी साइलेंस मूलटी साउंड नुह. कथाटी को बुझंतु टिके 2 मिनिट चिंता करंतु केते गुढ़ कथाटी. गच्छ र फल गोटे प्रोजेक्शन तार फाउंडेशन होची तार चेर द रूट. You cannot have a fruit without a root. Vyaktitir personality is from its root of culture, education, upbringing, environment, relations, possessions. Root our personality is everything. Personality is a projection. Any vision that comes is from a knowledge, from an idea. जे की रेफरेंस ड्रॉ करी की वर्ड्स तैयारी करे आ वर्ड्स थ्रू विजन तैयारी हुए तो थॉट टा डिफाइन हुए. साउंड रो सोर्स होची साइलेंस. देखंतु एठी टिके माने मुंड ऊपर प्रेशर पड़ियो. साउंड रो सोर्स बा गोटे वॉइस रो सोर्स इज फ्रॉम साइलेंस. आपण पुराण गुडी करे किंबा उपनिषद गुडी करे किंबा वेद व्यासंकर रचित अनेक लेखारे है आपण सुनिथिबे जेतेबेले किए का गोटे प्रश्न पचारे अनेक उवाच सब रही ए जो सब संवाद रही उपनिषद गुडी करे मध्य संवाद जेतेबेले हुए सेतेबेले जने प्रश्न पचारे तो देखियो many a times ताकू कवि बा ऋषि माने
नोइंगली पुट करचंती किसी समाधिस्थ होइकी बसिथिले आ तापरे से किछि समय ध्यान रे रही तापरे कहिबा को आरंभ कले। एमिति गोटे लाइन टा आपण पाइबे बहुत जगह रे, पुराण गुडी करे मध्य, अनेक पुरातन साहित्य गुडी करे मध्य कोनोसी व्यक्ति शिष्य माने अनेक प्रश्न पचारिबे तो गुरु टिके समय साइलेंस रहिबे तापरे उत्तर देबा आरंभ करिवे। It is not just a mere act. It is to connect to the primal source of sound. Speech, the voice, the sound has to come from that original silence. It always comes from. But ame tike majhire taku divert kar do. So many a times हुए कौन कि often the meaning gets distorted, the meaning gets a little twisted, the meaning gets a little diluted, perverted, overted. तो ठीक इनफॉरमेशन टा जाई कि पहुंचे। बट जदि सोर्स टा साइलेंस बोली आपण जानिबे, आपण देखंतु कोठी भी आपण जाउचंती सेठी गोटे अप्रीतिकर माहौल अछि एंड यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट समथिंग, आपण जदि सेठी जो विषय आलोचना होउची सेइथरु ही आपण जदि ड्रॉ करी कि इनफॉरमेशन किछि कहिबा को आरंभ करिवे, देन द वर्ड्स यू विल यूज, द इनफॉरमेशन यू विल यूज, the inference you will draw and the canvas that you will paint will be half truth. जदि सेठी जहा अछि केवल ताकू ही गढ़ी नै कि जदि आपण गढ़ीवा को चेष्टा करी, but if you look deep within from a silent cave inside you, then this truth is heard. देखिए आपण को व्यस्त करूथवा, आपण को किछि समय पई आसे ना जेमती गोटे खरा दिनटारे आपण कुआडे ट्रैवल करूचंदी हठात किना कळा मेघ आसी जो आउ घड़घड़ी मारी कि जेमती वर्षा आसीगला माने सबु सेंसेस खोली जाए नहीं। एबे तो खरा दिन झड़ा तूफान आछी, यू कैन एक्सपीरियंस इट, सबु सेंसेस खोली जीवो, माटी रो गंध आसुथबो, वर्षार शब्द सुबुथबो, घड़घड़ी मझिरे मारुथबो, सब सेंसेस, एवरी सेंस इज एक्टिव. It's nature way of making the senses active. ठीक सेमती यदि कोनोसी परिस्थिति रे माडटा जोर बाजिवा को जाउची and you are bound to respond, don't be in a hurry to use the words from the atmosphere, from the same atmosphere, can it colludes that space. आपण जिबे सेठिकार कथा, सेठिकार भाषा, सेठिकार माहौल टी एमितिया थिबो, if you try using your information source from there itself, सेमान जहा कथा होउछ जो विषय को नेकी, rather try to change those words from the words that come from within. एटा को प्रैक्टिस करके देखंतु. I have used and I am saying something with great experience out of it. Change the words that is being used in that dirty atmosphere. The लोक झगड़ा होउछंती, the kind of word they are using, the kind of context they are using, you try to change the context and the word itself. देखिए केते बड़ impact पड़ियो. Use something higher, use something better word to explain that situation, and that those words आपण बाबू कोठु आसीबो, it will come from a silence within you. It cannot come from the chaos, from the chorus outside. जमा आसीबो टिके संपन चुप रहि जिवे, सुनिबे उभय पक्ष, and then be a little concentrated and speak. We don't give ourselves opportunity, we don't give silence that opportunity. The big reason for that is, gotte minute mate break दियंतु. तेणु silence needs an opportunity within us. आम भितर तक गोटे opportunity दरकार. आम सब बेले जदि कोलाहलमय परिवेश भितरे से भितरे थिबा देवताटीर कथा सुनिबानी, ताले एमती चलथिबो सब, कोनोसी विशेष परिवर्तन आसीबनी.
ताकू सुनिबा पई आपण एकुटिया बसिबा दरकार नहीं. Just talk to yourself. Try to analyze every little situation that you face across. निजकू द्रष्टा, कर्ता, साक्षी ये सबू पोजिशन रे रखी की बुझीवा को चेष्टा करो. Because it is you who is there all over. It is every situation that you see, it is you only. जितने घटनाटी घटुला से समस्ते थिले. Once a thing is done and you are trying to recollect it or rephrase it or reimagine it, then it is all you. आपण को स्वप्न रे भी सब आपण ही ना, सेठी थोड़ी आ किछि बाहर जिंस अछि. There is no external agent. It is all you. Simply in your thoughts also it is all you. If you try to change every element of your information, every element of your thought process, then the entire picture will be different. Sound gives you that opportunity. You can use different words, you can use different context to build the same situation in a different manner. ये गोटे वेरी हिडन जिंस याको कहबार मानेटा केवल एतिकी थिला कारण अश्वपतिंकर गोटे एते बड़ उपलब्धिटी को हम एबे विल ट्राई टू डिकोड इट अ लिटिल, बट दिस विल गिव यू द टेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन जस्ट नाउ. लेट अस रीड दोज लाइंस. छोट छोट करी पढिबा. 18 टा लाइन अछि. पेज नंबर 21 रे अछु हमें, इन केस एनीवन इज ट्राइंग टू रिकनेक्ट. In the unceasing drama carried by time, on its long listening flood that bears the world's insoluble doubt on a pilgrimage without goal. एटा होची गोटे संपूर्ण लाइन. से कहले एठी, in that unceasing drama carried by time. So the drama which is being carried here, कहा द्वारा? By time. What is this drama? याकू ड्रामा रो संज्ञा काहे की दिया गला? When we get into Sri Aurobindo's writing in one of these texts, I just pick up this line. I mark the yes. In the unceasing drama carried by time, कालर प्रवाह भितरे अविच्छिन्न भावे जीवन नाटक अभिनीत होई चलीछि. ये जो टाइम कथाटी एठी कुहा गला, टाइम टी को जानिथिबे, इट इज द सब्जेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. से परमंकर आईटी टी कैपिटल मध्ये रहिछि, तेणु बुझिबार किछि असुविधा होनथुओ. परमंकर चेतनार सब्जेक्टिव डिप्लॉयमेंट होछि टाइम, आ ऑब्जेक्टिव डिप्लॉयमेंट होछि स्पेस, because it takes a form of course and we can define it, but time होछि तांकर सब्जेक्टिव डिप्लॉयमेंट. तेणु जेतबेला हम कहउछनी carried by time, it also means that it is governed by the supreme. It is governed by the supreme in the unceasing drama. अविच्छिन्न भावरे जो जीवन नाटकटी चलीछि, this drama of life, and it is carried by time. ता माने टाइम ही बा काल ही एगुडी को सब बहन करि चलीछि.
नदी रे कौन सी जिनिस जदि प्रवाह करदबा आमे से प्रवाहित हेबा सांगरे से जिनिसटी को सांगरे नहीं जाए तो आउ माने it becomes the carrier of the things. So the destiny of that object in the course of the river is determined by the river. तेणु जो काल को इंडिकेट करिके सब बेले रेफर करिवार ये होची गोटे अर्थ आमे काहे कि को मोर बेलाटा खराब पड़ी चिंता करन कथाटी मोर समयटा खराब पड़ी why do we put it on time why do we put it on particularly something which is linked to time तार गोटे खराब समय चलछि से बेले बेले एमती खराब समय पड़े आज बेलाटा भलो नहीं why is it indicated to time what is time what has time to do with it if we consider the time to be just the clock time or to be the time in its abstract sense of passage of day passage of week month or year if it is a quantifiable quantity only यदि केवल गोटे measurable sense रे हमें time को no then why do we put all the blame on time because in our understanding in our ancient scriptures in what Sri Aurobindo tells us about time is nothing but the consciousness of the divine तांको चेतनार अंश तेणु से टाइम हैज omniscience omnipotence and it carries this unceasing drama of the entire creation in itself how on its long listening flood एठी आसुची साउंड रो कॉन्टेक्स्ट एहार दीर्घ उत्कर्ण स्रोत धारा रे से विश्वर समस्त असमाहित संशय बहन करी चले एक लक्ष्यहीन तीर्थयात्रा सदृश on its long listening flood. This was very interesting. I tried to get something on this word listening flood. I'll share with you what we have here. With the new subtle from the writings of Shraddhavan, with the new subtle hearing that has come to him, mane to Ashwapati, as a gift of the spirit, Ashwapati can hear all these things going on, the unceasing drama that is being carried by time that is like a river or a sea, a flood, the long listening flood of time, as if time is also listening. Ebe comparison tiku bujhant. How it is carried by time. And खाली carried by time बोली कही रही जुए कि तापर Sri Aurobindo gives us a description that how do we put it on time? How do we connect with time for any incident, for any drama that is happening or anything that is happening in our lives? आम जीवन रे जहाँ घटुची, how can we put it on time? Because it is a long listening flood. Se sunoni, se sunuchi. It is listening. So time is now that part of the consciousness which listens to every activity that happens in our lives. Thus, it is the carrier of all these things in its course of flood or flow. So on its long listening flood that bears. Now what it bears we will try to understand, but it bears, and how it bears? By listening to those. So as if time is also listening, that flood or flow of time. So that flood is nothing but the flow of time which is listening from a long time, is carrying along the world's insoluble doubt on a pilgrimage without goal. So it's an insoluble doubt on a pilgrimage without goal. Time, like a great river or a huge wave
is carrying along with it all the dubiousness, the uncertainty of world. जहा किछि insoluble doubt टिए रहिछि काई कहले insoluble doubt कारण जो यात्रा रे अशोकती बाहरी चंदी बा जो यात्रा रे मनुष्यता जीवन रे बाहरी थाए से बहु समय रे अनेक लक्ष्य विहीन होई रास्ता रे चली थाए आ तार सेही तीर्थ यात्रा रे तार सेही सत्य संधान रे तार सेही जोग मार्ग रे मध्य किछि गुडे इनसॉल्युबल डाउट आसे a insoluble doubt ku we can understand as something which is dubious, something which is doubtful, something which is uncertain in our lives. It's feeling of being lost, as if we are on a pilgrimage but do not know the way or the goal, the destination. So an unceasing drama is going on, being carried along by the flood of time. In that drama, underneath the surface, there is something else which we will discover in due course. But एठी अश्वपतिंकर सेई समय सहित साक्षात्कार भलिया आमे किछि लाइन से एठी पाउचंदी इन द अनसीजिंग ड्रामा कैरिड बाय टाइम ठीक सेमिति अश्वपति मध्य सब सुनि पारुचंती ऑन इट्स लॉन्ग लिसनिंग फ्लड दैट बेयर्स द वर्ल्ड्स insoluble doubt on a pilgrimage without goal. जो तीर्थ यात्राटी बा जो काल प्रवाहटी चलीची सेठी अनेक जिंस हृदबोध हो थाई पारे अनेक जिंस बुझा पडु थाई पारे न पडु थाई पारे बहुत जिंस अनसर्टन लागु थाई पारे किंतु ए सब को बेयर करिकी टाइम चलीची जीवन रे मध्य बहुत जिंसर स्पष्टता बहुत समय परे आसे you just do it, you are just a part of it, you have been a part of it. आपण एबे भी जान नाहंती, you are not sure that why that incident or why something in your life happened for that particular reason. It will discover itself at some point of time. केते बेले जीवन रो को मुहूर्त रे को क्षण रे आसी जीवन रे नबी आस्परे सेंतिया मुहूर्त किंतु अनेक जिंस एंती डाउटफुल एंती इनसॉल्युबल हेकि हम चेतना भितरे रहि जाय आउ आमे से गुडिकर सम्मुखीन हेई मध्य किछि विशेष सेथिरु इन्फर करि पारुना कोन से कंक्लूजन रे पहुंची पारुना ताको छाडी दिया जाय एई समय ऊपर कारण समय सुनिछि से कथाटी आ साइती की रखिथिबो निज भितरे जेबे किछि ता सहित संबंधी घटना घटिबो समय फेरी जीवो तार सेई मुहूर्त को जो मुहूर्त से पुणी आविष्कार करी आनिबो सेई घटनाटी को आ हमकु मने पकेइ देबो एमती किछि घटिथिला. In the unceasing drama carried by time, on its long listening flood that bears the world's insoluble doubt on a pilgrimage without goal. How kon bear kare? Here bears is something which is given in a part context. So that bears the world's insoluble doubt on a pilgrimage without goal. It also bears a laughter of sleepless pleasure, foamed and spumed and murmurings of desire that cannot die. And murmurings of desire that cannot die. A cry came of the world's delight to be, the grandeur and greatness of its will to live, recall of the soul's adventure into space, a traveler through the magic centuries and being's labor in matter's universe. कौन डाय करि परिबनी तापरे क्राई केम द वर्ल्ड आछि किंतु एठी तीनोटी जिंस से बेयर करिकि चालिछि. प्रथमटी होछि द वर्ल्ड्स इनसॉल्युबल डाउट ऑन अ पिलग्रिमेज विदाउट गोल. एटा प्रथम जिंस दैट इट इज बेयरिंग के time on its long listening flood bears world's insoluble doubt. First. Second hochi a laughter of sleepless pleasure, foamed and spumed. ये गोटे नुआ कथा भी आम पाई. A laughter of sleepless pleasure. सी कौन
तो एठी गोटे कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ हुए जे जेतबे गोटे नदी बही चले व्हेन अ रिवर फ्लोज वेरी फास्ट इट फॉर्म्स फोम जनरेट हुए सरफेस ऊपर किछि किछि टाइनी बबल्स टाइप रो आउ जेतेबेले ताकू टच करी कि पवन हल्का से उठे सेतेबेले से फोम रु टिके ऊपर को उठी जाए एयर रे फ्लोट करने को स्टार्ट करे which is called spuming and that foam is blown by the wind so a bubbles गुडी को जेतेबेले एयर रे ब्लो करने को लागे तो फ्यूमिंग को जाए it gets spumed sorry not fuming it is spuming SPUMED spumed so the pleasure inside time or inside that flood of time there is a laughter of sleepless pleasure सही काल स्रोतरे एक विनिद्र सुखर sleepless pleasure माने a pleasure that don't allow you to sleep sleepless pleasure माने निद नथिले जो आनंद आसे सेमति बुझिबेनी sleepless आगरे लागिची so the pleasure is sleepless that means the pleasure don't allows you to sleep such a pleasure so laughter of that sleepless pleasure आपण एते खुशी जे आपण सोई पर नाहंती आ हसी चली चंदी consider that kind of a laughter of sleepless pleasure foamed and spumed ऊपर उठिबा को आरंभ कला and murmurings of desire that cannot die तेनो हमें तीनोटी जिंस देखिले insoluble doubt ताकू बहन करची स्लीपलेस प्लेजर तथा अनेक इच्छा गुडी कर क्षुद्र बाणी सब मर्मरिंग्स एठी प्रभाकर भाई लिखुछन ताकू एक विनिद्र सही काल स्रोतरे एक विनिद्र सुखर हास्य मध्य खेली चले जहा फेण ओ बुदबुद आकार रे ऊपर को उठी आसे ता संग को केबे भी लोप पाई जाउ नथिबा कामनार मर्मरित ध्वनि मध्य उठी आसे मर्मरित ध्वनि मर्मरिंग्स इनडिस्टिंक्ट साउंड्स ना मर्मरिंग्स रो गोटे माने हला इनडिस्टिंक्ट साउंड्स आमे यार जदी शब्द प्रत्यय देखिबा अनुच्च स्वर बा जोटा स्पष्ट भाव रे सुना जाउ तो indistinct sounds to someone who speaks very softly but they cannot die these desires are as such that cannot die so that they came what are those that cannot die so next class we will take up what all came with this insoluble doubt sleepless pleasure and murmurings of desire kon asila because there is series of things that started coming and that is what Ashwapati is feeling right now is able to be one with the flow of time and when he becomes one with the flow of time also reveals lot of truth in front of him to sei satya gudiko kon ame ei page 29 ro second half ru padhiba ko next class arambha kariba aji pai etiki thau आपण मन को पाखरे 2 मिनिट अछि वी विल कंक्लूड एक्जेक्टली एट 8 अपन किछि शेयर करिया को चाहउथबे किछि कहबा को चाहउथबे कोठी कोन त्रुटि रहि गला कोठी किछि एडिशनली रहिबो प्लीज डू शेयर थैंक यू सो मच